अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणी निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वखट्काराः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्येतद्धार्यते विश्वं त्वय्येतत् सृज्यते जगत् त्वय्येतत् पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालनी तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं सृष्ट्वामीश्वरी त्वं मृत्स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि अस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्ये भ्यास्पति सुन्दरी परा पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्या सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीताः कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमः मीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरोद्धारैर्देवी संस्तुता मोहयितो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ